Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Rajiv ji. Okay, Krishna, not in the class. Ramu, Abhishek, Sailesh, Nitish, Dharminder, Rajiv, Devyandu, Vivan, Qasim, Hari, Abir, Uday, Dhanu, Rahul, Manoj, Ravi, Kumar, Radha Krishna. All right, friends. तो आज मार्केट ऑब्जर्व किया? Yes, sir. It's trending selling side. Trending selling side. Okay. Okay, Sridharan. So the Yes, market was trending opening, right? Yeah. Whenever market opens trending, in the next 15 minutes, so the first 15 minutes candle would be formed. And in this Okay. case, within the next 15 minutes, what should happen? It should break the low. It should break the low and close somewhere here, right? Yeah. Yes. Okay. Did that happen? Did that happen, Sridharan? Yeah, it's happened, sir. Okay, it did not happen. It took support actually. So Yeah. it has to come and close below this line, right? So that means body should come below. It has to break and close. Okay. Okay. It has to come Okay. and close below this level. Okay. Okay. Now, since it did not happen, this candle cannot be considered as a sell confirmation. Okay. Okay. Then most likely Okay. the market is going to sell off from somewhere here, from the Okay. top. Okay. Now, in this case, this low was never compromised. If you see, it was never compromised. Oh, yeah. Okay. Fine. Now, who's gonna tell me? Uday. Yes, sir. What was the highest closing, or what was the closing of Nifty in the month of July? Sorry. Sorry, what? Around 11,400. Around 11,400. Not exactly 400. So 31st, it closed somewhere over here, right? This level, which is roughly 11,363 or so. Okay. Now, which means it closed above which particular level. So very important topic today, guys. Please focus.
So Nifty 50, I'm opening options chain. What are the levels at what difference? How many points difference? 50. 50 points. So if it closed above 300 and say 59 or whatever, okay, then which was the level that it closed on, which it broke on closing? 300. 350. Okay. So when the closing happened, it broke the 350 level on the upside. Is it clear to everybody? Yes, sir. Okay. Now, if Nifty has to continue on the upside because the trend is up, correct? So the trend is up. Let's open one Nifty 50, let's say daily chart. So we see that the trend is up, and this was 31st, the last day. This is where the high of July is, and कुछ यहाँ पे लो है. Yes, no, maybe. Yes, sir. Okay. तो basically we see that कि ये जो लेवल है ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ये ऊपर टूट रहा है, राइट? सो इट इज मोर और लेस इन एन अप ट्रेंड, एंड इवन इफ अगर हम ऐसे भी देखेंगे तो भी हमको एक अप ट्रेंड नजर आएगा इसमें. ओके. अब वापस चलते हैं निफ्टी 50 पे. तो 350 लेवल को इसने ब्रेकआउट किया, करेक्ट? तो 350 लेवल जो है हमारे लिए बन जाएगा एक इंपॉर्टेंट लेवल, एक सिग्निफिकेंट लेवल. ठीक है, जहां पे ये तोड़ के क्लोज कर रहा है, ये जो लेवल है ये एक सिग्निफिकेंट लेवल बन जाएगा. ठीक है. अब जब ये सिग्निफिकेंट लेवल बन जाएगा तो इसके ऊपर का जो लेवल है वो है 400 का. अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है अपसाइड पे तो उस 400 के लेवल को तोड़ करके वहां पे सपोर्ट बनाएगी और वहां से कंटिन्यू करेगी आगे. ये वाला लेवल. ठीक है. Yes, sir. अच्छा, तो मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड किस तरफ को है? Bullish. बुलिश है. आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ, Yes, sir. ट्रेंडिंग. गैप डाउन ओपनिंग हुआ, बुलिश में हुआ. कैन यू सी समथिंग? Build support. ओके. एंड विच लेवल इज दिस? ये कौन सा लेवल है? वही वाला जो पिछले महीने क्लोजिंग का 11,350 का लेवल था. ठीक है. इसी तरह से ये यहां पे गया है 400 के लेवल पे, इसने रेजिस्टेंस बना दिया है, आप देख सकते हो. ठीक है. नाउ फ्रेंड्स, निफ्टी अब एक रेंज में फंस गया है. मानते हैं? Yes, sir. निफ्टी जो है अब यहां देखिए, यहां पे इसने सपोर्ट बिल्ड करा, सपोर्ट बिल्ड करके 400 लेवल्स की तरफ गया, वहां पे रेजिस्टेंस बन गया और ये वापस नीचे आ गया. तो ये अब रेंज बाउंड हो गया है कंप्लीटली. मतलब ये है कि ये एक रेंज में फंस चुका है अब. ठीक है. Yes, sir. अब एक रिपोर्ट ओपन कर रहे हैं. निफ्टी 50 को ओपन करेंगे. ये वाला वीक चल रहा है अभी, तो हम ओपन कर रहे हैं
30 जुलाई से लेके अभी तक का। तो 30 जुलाई 1 2 3 4 5 ये एक सेट है सर 1 वीक का, सर और ये वाला एक सेट है 10 अगस्त तक एक और वीक का। सर ओके ये वाला जो वीक है इसका हाईएस्ट हाई कहां दिख रहा है हमको? 390 roughly 390। और जो 10th का क्लोजिंग है वो इस लेवल के ऊपर है या इस लेवल के नीचे है? ऊपर है। ऊपर है। तो बुलिश है बियरिश है? बुलिश बुलिश है। ओके दूसरी चीज, इस वाले वीक का ये जो 30th जुलाई से लेके 3rd अगस्त तक का दिस वीक, व्हाट इज द हाईएस्ट वॉल्यूम? हाईएस्ट वॉल्यूम कितना है? 287 287, राइट 287 दिख रहा है अपने को ये वाला। अब यहां से 6 अगस्त से लेके 10 अगस्त में क्या इस वॉल्यूम में ब्रेकआउट आया है? हाँ, आया है 10th अगस्त। ब्रेकआउट आया है। तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि निफ्टी में मोस्ट लाइकली एक डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है और इसने क्लोजिंग पिछले वीक के हाई के ऊपर दिया है, राइट? यस सर। तो बायस किस तरफ का रहेगा? बुलिश ओके तो हमारी ट्रेड में जो बायसनेस रहेगी वो बाई साइड रहेगी। यस सर। ठीक है वापस चलते हैं। अब ये दिख रहा है कि 350 का जो ये लेवल है और ये जो 400 का लेवल है इसके बीच में ये फंस गया है, राइट? यस सर। देखिए इसको हिट करने के बाद फिर वापस आ गया था ये 350 के आसपास में, राइट? इस वाली जगह पे। यस सर। तो अब अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो किस तरफ जाने की संभावना सबसे ज्यादा है? ऊपर ऊपर। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि मोस्ट लाइकली शायद ये जो रेंज है वो ऊपर की तरफ ब्रेक होगा। ठीक है, ये हमारा हाइपोथेसिस होगा। ओके हमारा हाइपोथेसिस रहेगा कि मोस्ट लाइकली ये जो निफ्टी की रेंज है ये ऊपर की तरफ ब्रेक होनी चाहिए। ठीक है, और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाती है तो पिछला हाई कहां पे है? समवेयर क्लोजर टू दिस लेवल 490, यस सर। राइट? तो ये क्या करेगा अगर इट बिकम्स ट्रू, तो ये शायद ये 490 विच इज 11,500 लेवल्स को शायद ब्रेक कर देगा। ठीक है, यस सर। तो इसको अब आप वॉच करेंगे। ठीक है, यू विल हैव टू वॉच दिस एग्जाम्पल ड्यूरिंग दिस वीक। ओके अब फ्रेंड्स किसी भी एक स्टॉक का नाम लीजिए। यस बैंक। यस बैंक। Yes, please. M&M. If it is possible, M&M. ओके M&M। ठीक है M&M करते हैं फिर यस बैंक करेंगे। ओके ओके M&M को ओपन कर रहे हैं रिपोर्ट्स पे।
सबसे पहले इस एक्सपायरी का डेटा देखते हैं. And then today monthly breakout, sir. Monthly breakout. Yes, sir. Monthly, weekly. This is 42, right? 42, Yes, sir. 24. Okay, delivery volume. Huh? Yes, sir. Okay, right. Okay, तो देखते हैं. यहाँ पे कहीं पे एक्सपायरी, ये वाला एक्सपायरी ओपन हुआ है, तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम बढ़ा है. इस दिन भी वॉल्यूम बढ़ा है डिलीवरी. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से चेक करते हैं वॉल्यूम को. वॉल्यूम भी कुछ बढ़ रहा है, राइट. ओके, अब इफ यू लुक एट द डिलीवरी क्वांटिटी, यहाँ पे ये यहाँ इंक्रीज हुआ, इस दिन हाई बनाया 941, 924 का लो. नेक्स्ट डे कूल ऑफ हुआ, तो इट वाज नॉट एबल टू ब्रेक आउट दिस लेवल, Yes. Range bound. रेंज बाउंड. उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज हुआ, और जब यहाँ पे कूल ऑफ हुआ तो इट ब्रोक इट ऑन द अपसाइड, राइट. Yes, sir. ये 925 पे था और इसने ब्रेकआउट कर दिया इसको और क्लोज हो गया 934 पे, राइट. तो Yes. प्राइमरी ट्रेंड किस तरफ को है? Uptrend. Bullish. अपसाइड, राइट. नाउ इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं जब ये डिलीवरी क्वांटिटी बना था, जब ये डिलीवरी क्वांटिटी बना. Hello. यस श्रीधर. Actually, sir, my doubt is yesterday I Your voice is very, very feeble. Can you just adjust your mic? Can't hear you. Sir, it's me, Ramu, sir. हाँ रामू, yeah. Sir, before that, on 2nd August, sir, Hmm. on 2nd August, the volume was less and it broke the previous day low also. Hmm. The LTP was broke the previous day's low price, that is 926.1. Hmm. Here we can analyze that it has, it may be in a bearish scenario. No. Because See, volume with deliverable quantity, what we try to Yes. analyze is कि position Yes. बना या नहीं. Yes, sir, here reduced, no, sir. 10 lakhs 39 to it has reduced to 10 lakhs 19. With the That lower means deliverable volume- quantity, which means there is supply. Sir, I did not understand, sir. There is supply. Hello. The deliverable quantity has reduced, right? Yes, sir. Yes, sir. So when the deliverable quantity has reduced, which means less of selling is happening, right? Yes, sir. It broke the previous day low also. Previous day low also, which is okay. Now, when Sir, less of selling in is this happening, case, yes, in this case, can't we analyze that it is in bearish mode? no, because That is the thought. when Because today morning only, I have taken this M&M script, sir. Hmm. Exactly, you also took the same script, so that is why I am asking. so you will not take it as bearish. The reason being, here the deliverable quantity has reduced, right? Yes. Now we say that if what is deliverable quantity? Deliverable quantity is nothing but a selling quantity, right? Somebody was holding it, he sold it in the market, correct? Yes, sir. Now, if it is a selling, then somebody has also bought it. Yes, sir. Okay, so we are trying to analyze that where is the position getting formed. Okay,
our this thing of analyzing with deliverable quantity is not bearish and bullish primarily. We are trying to first of all analyze that which level is are the positions getting created. Now the positions will get created when the selling is also heavy and the buying is also heavy. Yes. Okay, so if the selling is reducing, then anyways the supply in the market is reducing. Now if the supply in the market is reducing, the stock reacted negative. Yes. Okay, now this could be due to speculation. I have said no that the speculative volume is here. When you look at this volume, which is 1652 795, okay, and if you minus this value, which is say 10 19 499, okay, so there was a speculative volume of around 6,33,000 shares. So these speculative volumes can create something which is called as noise, Intraday. right? So these are only intraday positions, right? So these will create noise in the system. Okay, and the noise is basically something like this. A noise is something like this. Say for example, if this is the level, the noise is this. Okay, if these two are the levels, the noise is this. So, Okay, so this is created by speculation. Okay, so what we are trying to do is in this sort of analysis that we are trying to identify position building, the primary trend of the stock. So which side is the deep pocket investor going? Excuse me, sir. Yeah, Hello. yeah, go ahead. Actually, my doubt also same, Mr. Ramu's doubt. When we are seeing the deliverable quantity is continuously is getting low, 1064, 1039 and 1019. So we don't want to consider these dates. Then next we have to go, the next level is 1046 only. Yeah. You will not consider the days when the deliverable quantity will reduce without Okay. establishing a primary trend. No, actually, it is primary trend is established on 2nd August. What Mr. Ramu said is reduced deliverable volume and price also Which is less. okay. So it's Is the first breakout. deliverable quantity higher than the previous day? Previous day means the day for which the low is broken. Okay. Is it with higher selling? No, no, it's not higher selling. It is not higher selling, right? Do you see Yeah. after that this 910 was never revisited? Yes. Yeah. It was never revisited. Okay. So, so the reason we do this analysis is to first establish, say for example, let's go back to this open M&M. I will tell you why do we do this. Okay. Okay. Why is it important to establish primary trends? Otherwise, it will be an issue to establish that which side is the stock wanting to go. Now look at this chart of M&M. Now say for example, this is a daily chart, right? Yeah. Now, this day it was a green candle, right? Yes. This day it is a red candle. This day it is an inside candle. This candle doesn't have much of significance also, this one. Okay? So, see, we want something like this. We are looking for something like this. Okay? We want to avoid
something like this. In this kind of a scenario, इस तरह के सिनेरियो में पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है. Okay, now we will also discuss about this particular thing also, but just for example, I'm using it. It seems to be kind of a bearish engulfing, right? This candle. कुछ bearish engulfing की तरह लग रहा है, right? Yes, 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 sir. कुछ लग रहा है, right? तो इसको तो गिर जाना चाहिए. Why is it not falling? Why is it going back? Do you see this? So the analysis that we are learning is used in order to find out that there could be noise like this. ठीक है, इस तरह का नॉइज हो सकता है जो कि आपके डिसीजन को एक गलत दिशा में ले जाएगा. ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इसको देखिए, निफ्टी को मैंने तो बाई किया था आज, मैंने सेल नहीं किया. ठीक है, हालांकि इट इज गैप डाउन, राइट? Yes, sir. But I only bought. There was no reason for selling today. आज कोई रीजन ही नहीं था सेल करने का, और मुझे पता था ये 400 के लेवल पे जाके इसको प्रॉब्लम आएगा. क्यों आएगा ये देखिए. This opened above this day, Yes, sir. came down and closed. Yes, sir. ये ऊपर गया था, ऊपर खुला था, Yes, came down and closed. yes, फिर ऊपर खुला और सीधा ऊपर चला गया, राइट? पर Yes. यहां पे तो रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ था, राइट? yes, sir. अगर यहां पे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ था तो जब भी ये इसके नीचे खुलेगा तो ये यहां पे रेजिस्टेंस फॉर्म करने का कोशिश करेगा. Yes, आज ये नीचे खुला, yes, रेजिस्टेंस फॉर्म किया. yes, ओके, तो these analysis will help you eliminate the noise and be with the actual trend. एक्चुअल ट्रेंड के साथ आपको रहने में आपकी मदद करेगा. ठीक है, इज दिस क्लियर श्रीधर एंड रामू? Yes, sir. ठीक है, सो वी विल अवॉइड दीज. Okay. Still, some doubt is However, here we have to. however, Here you are considering the delivery volume is very less. yeah, less. Isn't it, sir? Yeah, when That the we have to delivery consider. volume is lesser, Yes, sir. okay, that day will not be considered for deciding a primary trend. No, that is what, sir. There should be a little bit. There should be some gap. Correct. No, sir. Here 10,39,000 and 9,64,000. This is showing some abnormal change. Huh. Is it, sir? Yeah. See, for example, did the volume increase here in Yes, sir, respect to little this bit. one? Whatever. Yes, sir, little bit. It increased, Yes. right? So Yes, when it increased, it means compared to yesterday, there was a little bit of more selling that happened. Yes. Okay. Yes. Now, when a little bit of more selling has happened, it means that it can go above this high and it can go below this low. There is no problem. Yes. Okay. Yes. So when this has happened, look at the highs and the lows. The high is 941 and the low is 924. Okay. Yes. On this day, there is a little bit of less selling which has come in the market. Yes. Yes, sir. Now, the reaction of the stock should be the same when the volume is reducing, when the supply is reducing. This day, the supply has reduced. There is less selling which has happened today. आज less selling हुआ है, ठीक है? Yes. तो जब less selling हुआ है, the price should either come below this low or should go above this high. About high, yes. ठीक है? नहीं हुआ. It is to 929, Range bound. which is range Range bound, bound. which means it is noise. Yes. It is telling me that this is noise. Okay. Yes. However, when I look at this volume, this day there was a little bit of more selling.
Okay, 10 lakhs 40, 1046 46,000 compared to are- 1019. Yes. So little bit of more selling has happened. So the high was 925, low was 914. Next day the volume cooled off, which means that little bit less selling has happened. Yes, sir. Now when little bit less selling has happened, did it break this 925 or 914? The answer is yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now this data is no more a noise data for me. Yes, sir. Okay, and this is also telling me कि the trend जो है it is on the upside, because that is the reason there is demand which has come. Yes. This is telling me Upside that means the demand has come. it upside means it broke the previous day high. Correct. Isn't it, sir? Correct. Broke means closed, right? Last price is above the high price of yesterday. Yes. Closed about previous day. Correct. So now I know that this is not a noise data. This is a actual data. This is a trending. position building data. Okay. So this is basically a position building data, which means the people, when they sold here and somebody bought, people who bought are most likely to go right. Yes. This is what it is confirming. This 9 lakh data is confirming that this 10 lakh 46,000 selling which has happened, people who have bought on this day most likely will be winners. Okay. I think do you mean that they are still holding the Yeah, they are holding. position? They are holding the Yes, position. 9 lakh 64,000 means. Right. Yes. Okay. So this combination of the data is not a Hello, noise sir. data. This is the Actual data. actual data. Actual. Yeah. Sir, can we consider in this case something deliverable quantity? Can we consider percentage of deliverable quantity also? No, percentage has no meaning. Percentage is ratio, no? Yeah, deliverable quantity percentage. कभी भी परसेंटेज decide. नहीं लेना है, क्योंकि परसेंटेज रेशियो होता है, तो रेशियो का कोई मीनिंग नहीं है. हम कभी भी एवरेज वैल्यूज को इस्तेमाल नहीं करेंगे. हमको एब्सोल्यूट से मतलब है. No, he was asking the same question I want to ask. Hmm. Earlier it was 10 lakhs 39 to 10 lakhs 19,000. 19,000. There is a marginal gap. Later it has reduced from 10 lakhs 46,000 to 9 lakhs 64,000. There is a marginal gap. That is what he is asking, sir. Do we consider any 1%, 0.5%, 2%? His question is, do we use this percentage because this has increased or whatever? Yes, So, sir. Yes, that is. So this has no meaning. It is useless information for you. Okay. So Actually, one more question about the position leveling, that support point, where I have to take which point. If it is a particular day 1046 and 964, you can consider maybe it's not breaking the strike price. Then how I can find the strike price? The that is what we are support about level to learn. line. That is what we are about to learn. We are at step number 1 right now. Okay. Okay. Any other question? Is this clear? ये क्लियर है कि कैसे पकड़ रहे हैं एक्चुअल डेटा को? Yes. Okay, good. अब ओके, तो अब यहां पे अपने को समझ में आ गया कि प्राइमरी डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहां पे बाइंग हुआ है. करेक्ट? इस वाली जगह पे there are buy positions which have been created. So this got clarified by the combination of these 2 days. Correct? Now let's see कि जिस दिन पे हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था उस दिन का ओपन प्राइस कितना था? 914. एक चीज को चेक कर लेते हैं. यहां पे एमएनएम लिखूंगा.
ऑप्शंस में चले जाएंगे, कितने के लेवल्स हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? 20. 20 रुपीज, ठीक है। तो जब ये इस दिन पे पोजीशन बना तो ओपन 914 पे है एंड द लास्ट प्राइस इज 920.25। कौन से लेवल को तोड़ा है इसने? 920. 920 लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो लेट्स सी, या डेली पे भी कर सकते हैं। सो व्हाट वाज द डेट? 3rd of August, okay. So सो 920 का लेवल है और 3rd of August को ये मार्जिनली ब्रेक हुआ है, राइट, इस वाली जगह पे, Sir. okay? Yes, sir. तो अब आइडियली होना क्या चाहिए कि ये जो 920 का जो लेवल है और जो 940 का लेवल है, ठीक है, इसके बीच में हमको एक रेंज सेटअप होना चाहिए या फिर 920 पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए, करेक्ट। अब Yes, sir. थर्ड के बाद फोर्थ सिक्स्थ को आप देख रहे हैं कि प्राइस प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। प्राइस प्रोसीड किया, ये ओपन हुआ 940 के ऊपर, प्राइस गिर गया, यस नो मे बी। Yes, sir. Yes. तो ये जो 940 का जो लेवल है ये एस्टैब्लिश हो गया कि ये रेजिस्टेंस है, Yes. यस और नो? Yes. ठीक है, कि ये वाला जो लेवल है ये रेजिस्टेंस है, ये हमने निकाला कि यहां पे पोजीशन बना है, राइट। 920 पे पोजीशन बिल्डिंग हुआ है, 940 पे रेजिस्टेंस आ गया है। नाउ गाइस टेल मी, बाय जनरल थ्योरी ऑफ स्टॉक मार्केट, जब कोई स्टॉक बुलिश हो जाता है तो क्या वो रेजिस्टेंस तोड़ता है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या ये रेंज टूटा? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ये रेंज टूटा। Yes, sir. क्या ये 960 पे गया? हाँ सर। ठीक है, Yes. 960 is 20 rupees, correct? 960 is 20 rupees. 20 Yes, rupees sir. is how much? 40% return on capital. ठीक है। However, ये जो 20 रुपया होता है, 20 रुपए का मूवमेंट इज नॉट लेस देन 50% रिटर्न ऑन कैपिटल इन ऑप्शंस। 50-60% रिटर्न ऑन कैपिटल होगा मिनिमम। ये जो एक रेंज को तोड़ना जो होता है वो करीबन इतना होता है, ठीक है। तो जब ये रेजिस्टेंस बना तो इसको इस लेवल को तोड़ के नीचे चले जाना चाहिए था, यस नो मे बी। Yes, sir. पर ऐसा नहीं हुआ, इस रेंज को इस तरफ टूटा, ऊपर की तरफ तोड़ दिया गया। Yes, sir. रेंज को नीचे के बजाय ऊपर की तरफ तोड़ दिया गया, ठीक है। ये टूटा कब? 10 तारीख को, फ्राइडे को। ये जो डिलीवरेबल क्वांटिटी आप देख रहे हो, जिस दिन हमने It's more. पोजीशन बनाना बात किया था उससे ज्यादा है या कम है? ज्यादा है. समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. वाई इज डिलीवरेबल क्वांटिटी इंपॉर्टेंट? Yes, sir. ठीक है। अगर यहां पे देखोगे ये जो वॉल्यूम देखो 31 का है, और जिस दिन ये पोजीशन बिल्ड हुए थे उस दिन का वॉल्यूम कितना था? 15 का। lakhs. ये भी ज्यादा है। Doubled. Yes, sir. आज ऑटोमेटिकली वॉल्यूम ज्यादा हो गया। Yes, sir.
Okay, Yes, sir. agreed? Yes, sir. So these are this is a method by which you will be able to trade any stock that you want, any stock in Nifty 50 that you want. Okay, right now I'm not talking about mid cap 50. Which one was the other one? Yes Bank, right? Name and how long this will be bullish, and when this become bearish, sir. Hmm. Good question. Uh, to me, see the July high is here, right? Sir. So the July high is roughly here. This is the first time it has broken this range. Yes, sir. If this range is sustained, this thing would be that it should go to 1000 level. Okay. And today actually up to 1100 call is open. Open, no? So Yes, sir. most likely it should go to 1000 level. You can look out for, because see, you also have to be cautious. See, 960 it has developed as a resistance. Yes, sir. Okay, now Yes. this is not a confirmed resistance, but it is a Yes, mini resistance. At least it was not able to break out 960. yes, sir. Okay, now let's see on a day when it opens at 960, above 960, and if it comes down and closes, अगर ये नीचे close हो जाता है, तो Yes, sir. ये resistance level confirm हो जाएगा. Okay. फिर अगर ये इसको तोड़ जाता है तो गया. अब क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन अभी तक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर्मेशन है वो हुआ नहीं है, Yes, sir. तो ये भी हो सकता है कल ये 980 पे चला जाए. इट इज वेरी मच Yes. पॉसिबल, बिकॉज राइट नाउ देयर इज नो रेड कैंडल विच हैज opened above this level and have come down, Yes. which confirms a resistance. Like over here you see it confirmed a resistance, right? Yes, sir. Yes. Okay, so it has confirmed a resistance here. That has not been done. Now I don't know if tomorrow it opens at 961 and it closes at 955, then that resistance is confirmed. Then again if it breaks on the outside, then it will move to 980 level. Yes. ठीक है, तो स्टॉक्स में मूवमेंट बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है. ठीक है, मूवमेंट इन स्टॉक्स इज वेरी स्ट्रक्चर्ड. बस आपको अपने आईज को ट्रेन कर लेना है. Okay. Yes. Now which one was the other? Excuse me, sir. Huh. Sir, in this case, position building, the support line we make 20, the 942, 922, 940, because that particular day it's the strike price is crossed. It's not happening means what in the SBA stock I seen yesterday only from 27 to until till date. Yesterday only that strike price is crossed range. So how we can take that? SBIN results were on Friday, right? I don't know. I didn't see. You have to know this, huh? And I will show you. Just remind me by the end of this class. I'll have to show you from where you can check all this. Okay? It was there in that video which was sent to you, but I will repeat it. Don't worry. Just remind me, huh, before the end of the class. Okay. Okay. So this is State Bank of India, right? Yeah. Okay. I won't If even you look. go to the volume chart, I won't the even look at deliverable the quantity chart. data. See, this is 1st of August, right? Okay. This is 1st of August. This is the first day. Yeah. Okay. And this was the last day. It seems that, okay, some sort of uptrend is forming or whatever, this thing. Okay. Now,
we'll go to delivery quantity, okay? But before that, Yeah. just want to show you something. So 31st, so this is where it closed. So it closed at 293. Yeah. Okay, so what is the strike price difference in this? 10 to 10 rupees. 10 rupees, right? So it broke 290, right? Yeah, it opened below and it broke, right? So so 290 level was broken, correct? Yeah. Before it closed, okay. So after 290, above this is 300 level, right? Yes. What I'm doing is stocking the stock. स्टॉक का पीछा कर रहा हूं मैं, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पे कि ठीक है, चलो समझ गए कि 290 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो 290 सपोर्ट बन गया, अग्रीड, ओके, मान लिया कि this line is a support line. Okay, fine, very good. Now I need to also understand where is the resistance. Okay, now the resistance at 300 did not come. So let me draw 310. Every 10 rupees there is a strike, right? Yeah. So 310. This opening is not above. This day is the first day, the opening is above, right? Yes, no, maybe? Yes, sir. Yes. Okay. So it did not form the resistance yet. This day it has formed the resistance. Correct? Yes, sir. Okay. अब जब यहां पे रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, व्हाट इज द रेंज नाउ? मोटा मोटी द रेंज इज 290 to 310. 3 rupees. This 20 rupees is now the range. From where, by a very stupid analysis, I am saying that this is what I will be eyeing for. This 20 rupees. Okay, if I have to trade this. Okay. Now let's look at the delivery volumes also. Okay. So this is how, even if you don't have data, at least Okay. you can gather some information about the stock. Now see, if you have to, you will trade it long, right? Because it's in a uptrend. It's a green candle, correct? It opened below and it Yeah. closed above. So you want to trade it long, correct? Now, if you want to trade it long, Yes. what is the fundamental principle kya hai? Ki if the stock is bullish, it will continue breaking resistances, correct? Yes. It will not break supports. It will form supports and it will break resistances. So for that, इसको पहले resistance form करने दो. ये रेजिस्टेंस फॉर्मेशन यहां पे हुआ है. तो अब देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या होने वाला है. ठीक है, मेरे लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब जाकर के परव्यू में आएगा. अभी तक मैं देखूंगा, देखा भी नहीं इसको. ठीक है, अब यहां चलते हैं, इससे कुछ चीजें को वेरीफाई करते हैं. SBIN. ओके, so let's see, this day volume increased, correct? Yes. Okay, so when the volume increased, high was 299. ठीक है, इस दिन पे कूल ऑफ हुआ, लो हाई कुछ नहीं टूटा, nothing broke, Sideways. sideways. Reduced, increased this day. This day increased again in continuation. This day increased. So let's see, 311.35, low is 360. ठीक है, अब Yeah. next day cooled off but sideways. 310. Yes. Okay, okay, now this day again increased. The next day also Next day increased. also increased.
So next day, this is 326.40 Yes. and the low is 300.50. Today the volume reduced. Okay? Today the volume has reduced. Where is the price? Below, above? Below. Below. So this is suggesting me that deep pocket investors have closed their positions. They have exited. Okay? Yes. So the deep pocket investors have exited the market, this particular stock. अब अगर deep pocket investors have exited, then it should start breaking what? Support. Supports, Good. right? So अब इसको सपोर्ट ब्रेक करना चाहिए. तो सबसे पहला चीज तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है. ये वाला देखो, इसके ऊपर मंथली क्लोजिंग हुआ है ना 290 के ऊपर. दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द सपोर्ट, राइट? Sir. सबसे पहले तो इसे तोड़ेगा ये, हमेशा याद रखना है आपको. Whichever is the resistance or whichever is the support, okay, if the stock is going bearish, अगर स्टॉक bearish जा रहा है तो वो सपोर्ट तोड़ेगा, और स्टॉक अगर बुलिश जा रहा है तो वो क्या करेगा? रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा. Resistance. इफ दैट इज द केस, और समथिंग कुछ पिछले महीने में बुलिश चल रहा था, इस महीने का कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि वो बेयरिश हो गया है. ठीक है. एंड PSU बैंक इंडेक्स दिस वीक इज ऑल्सो साइडवेज. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि अब इसको 290 के नीचे एक सपोर्ट बनाएगा और उस सपोर्ट को क्या करेगा? ब्रेक करेगा. तो या तो ये सपोर्ट को बनाएगा 280 पे, ठीक है, उसके बीच में फंसेगा, नीचे ब्रेक करेगा और सेल ऑफ हो जाएगा 270 260 लेवल्स तक. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. या फिर ये इस 290 लेवल पे ही घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, एंड अल्टीमेटली या तो यहां पे एक्सपायर हो जाएगा. व्हाट इज दिस बियरिश? व्हाट bearish engulfing also from previous? Actually, it seems to be like that only, but the opening is not above this. Okay, so uh, for a bearish engulfing, the opening has to be above the green candle somewhere here, and the closing should be below this candle. I will show you. We will study engulfing this week, so we are going to talk about it. ओके. तो अब ये भी हो सकता है कि ये 290 लेवल्स को ब्रेक ही नहीं कर पाएगा, और एक हायर डिलीवरी. देखो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा दिस डे, राइट? Yes, sir. This is the most important data. What is the deliverable quantity? The deliverable quantity is 177. What is the traded volume? Is some 11 crores or whatever. Okay, you never know that with the heavier quantity and a heavier deliverable quantity, it breaks this level. 310. ठीक है. फिर इसको मिनिमम हम ट्रेड करेंगे 330 लेवल, जो कि इस हाई के ऊपर है. फ्रॉम दिस 310 इट विल गो टू 330 लेवल, विच इज दैट 20 rupees what you say gap which has been created. ठीक है. Sir, my question is from the deliverable quantity chart, how I can find that 290 support level line. I couldn't see the 290 support line. Only I seen the 300 and 310 strike price only breaking on
10th of August. So I can draw the line 310 and 300 only. Okay. See, 31st of July, right? This day. Or say, let me open a separate report for you. There are so many reports. You see the security wise high low value? Yeah. Okay. I'm clicking on this. I'm writing SBIN. I'll say monthly high lows and say the period is 2018 and the month is July. Okay, because I want to look at the July data only for trading in August. Now, where did it open in July? 258 on 2nd of July. Okay. 2nd July. It made a high of 302. 302 July. on 31st of July. It made a low of 250 on 17th of July and it closed at 293.50. Okay. On 31st of July 2018. Okay. Ignore this because these are not adjusted for splits, etc. Okay. Okay. Don't worry about this. That why is it 3000? Because there was a stock split which happened. This is not adjusted value. So let's look at this data. Okay. I will not go on the chart. Let's do it on a piece of paper. Now, I want to draw some important lines on this, okay? One is okay. So now tell me, first thing, is it a green candle or is it a red candle? So green candle. It's a green candle, okay? What is the high? High is 302.4. Okay, 302.4. So what is the highest resistance that it has hit? It's highest 302 is the highest, and So it is 300 because it never closed above it, right? Yeah. Okay, so the resistance of this month is at 300 level. Yes. Because the closing is 293, जिसका मतलब हुआ कि support is at 290 और resistance जो है वो 300 पे है. When the month on 1st of August is starting. This is my starting data. So where is my resistance? My resistance is 300. 300. And my support, one of the support lines, important support line जो है वो है 290 पे. ठीक है. इसके अलावा there is also a low, right? How much is the low? Yes. 250.45. 250.45, which means कि इसने नीचे वाले साइड पे कहां तक सपोर्ट पे गया? 250 तक गया. नहीं गया, 260 तक गया. 250 तक जाने के लिए 250 से नीचे का नंबर होना चाहिए, राइट? ओके. ये तो 250.45 से रिटर्न कर गया ना. It has never touched 250. 250 not touched 250. Not touched. What did it touch comfortably? It is 260. Yes. ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? 260 को टच किया है, 250 को नहीं किया. तो जो सुपर सपोर्ट बोल सकते हैं
वो 260 पे है। तो मुझे ये बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये, ऑन 1 जब मैं ट्रेडिंग शुरू कर रहा हूं तो मेरे पास ऑलरेडी 2 सपोर्ट लेवल्स हैं। Yes, sir. 290 का और 260 का, और एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 300 का है। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट पे। Yes, sir. तो 300 was known, this resistance line, or this should be 260, right? 260 is my second or say super support यहां पे, करेक्ट? यही बना दिया हमने यहाँ पे Yes, sir. चार्ट पे, what we have drawn here। Yes. Yes, sir. ठीक है, इस चार्ट पे हमने यही चीज को बना दिया। अब होना क्या चाहिए था, 300 रेजिस्टेंस है, राइट, और 290 सपोर्ट है। तो अगर इसको प्रोसीड करना है तो ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, राइट? Yes, sir. फिर यहां पे आएगा, इसको सपोर्ट डेवलप करेगा। ये मैंने फ्राइडे को पढ़ाया Yes. आप लोगों को। Yes, sir. 300 लेवल पे इसको सपोर्ट डेवलप करना पड़ेगा, और ये प्रोसीड कर जाएगा आगे 350 के लेवल तक। Yes. ठीक है, ये 350 पे चला जाएगा। जो अगला सिग्निफिकेंस है इसके लिए वो 350 पे है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे होगा, स्टॉक्स राउंड फिगर्स में मूव करते हैं। ठीक है, स्टॉक्स विल ऑलवेज मूव इन राउंड फिगर्स। तो अब देखिए यहां पे, इसने सपोर्ट तो बिल्ड नहीं किया ना अभी तक। अगर आप वैसे देखो तो सपोर्ट बिल्ड नहीं किया। क्या इसने रेजिस्टेंस बिल्ड किया है? ये देखिए यहां पे 300 ब्रेक हुआ है, 300 के ऊपर गया है और यहां पे वापस आ गया है, इस वाली जगह पे 300 के नीचे वापस आ गया है। Yes, sir. तो ये जो रेजिस्टेंस है अभी भी रेजिस्टेंस ही है, मानते हो? Sir. और ये 1 था, इस दिन पे ये 290 के नीचे गया था, Sir. सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर आ गया। देख रहे हो, Yes, sir. Yes, sir. राइट? सस्टेन नहीं कर पाया, वापस ऊपर चला गया, ऊपर ब्रेक कर गया, 20-25 रुपीज का मूवमेंट बना गया ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखो, डोंट थिंक दिस वे कि ये तो ऑलरेडी 20 रुपीज यहां चला गया, मेरे को नहीं मिला, मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूंगा। डोंट नेवर थिंक इन स्टॉक मार्केट लाइक दिस। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, ये बहुत हेल्दी होता है। अगर एक 300 रुपीज का स्टॉक 30-40 रुपीज का मूवमेंट बना रहा है तो वो पूरे महीने 30-40 रुपीज का मूवमेंट बनाता ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने करेक्ट पोजीशन पे अपने बाई को या सेल को बना लिया, ठीक है, तो आपके लिए उसमें से प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, द स्मार्ट ट्रेडर्स विल नेवर ज्वाइन द मूव ऑन द फर्स्ट गो, दे विल ज्वाइन द मूव ऑन द सेकेंड गो, क्योंकि जो सेकेंड गो होगा उसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होगा कि वो इसके ऊपर वाले लेवल को भी तोड़ के निकल जाएगा, एंड वाइस वर्सा। जब वो नीचे गिरेगा तो वो नीचे के लो को भी तोड़ के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्टॉक के मूवमेंट को समझना है। ठीक है, तो जस्ट बाय ड्रॉइंग वेरी सिंपल लाइंस, टेल मी समथिंग, इज इट स्टिल बेयरिश? No, sir. 290 support. 290 सपोर्ट इज स्टिल हेल्ड, राइट? Yes, sir. अब कोई अनाड़ी होगा तो वो ये बोलेगा, ओ माय गॉड, ये तो SBI is selling off, SBI is selling off, SBI is selling, they will start jumping on their seat, right? But it seems that it is still not ready for trading. It is trying to find its feet during the August month. ठीक है, यहां पे भी खरीदते तो दिक्कत हो जाती। ओके, यहां पे बेचना है ये तो किसी को पता ही नहीं था, nobody knew about it, right? That we have to sell it at 320 level because that resistance is not established.
नाउ वी नो दैट एक हायर रेजिस्टेंस फॉर्म किया है विच इज अ 310, करेक्ट? इसने एक हायर रेजिस्टेंस 310 पे फॉर्म किया है। अब अगर मैं इसे एज अ हेलीकॉप्टर व्यू देखूंगा तो ये तो हायर रेजिस्टेंसेस बना रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? अ बुलिश स्टॉक विल मेक हायर रेजिस्टेंसेस, करेक्ट? एंड अ बियरिश स्टॉक विल ऑलवेज मेक लोअर सपोर्ट लेवल्स, क्योंकि वो सपोर्ट तोड़ तोड़ के नीचे जाएगा ना। तो सपोर्ट लेवल्स जो है वो धीरे धीरे करके नीचे 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 मूव करता जाएगा। ओके, तो इसमें अभी तक क्या समझ में आ रहा है कि वेयर वाज द लास्ट मंथ रेजिस्टेंस? 300. 300. Where is the current month resistance after reading data? 310. Is this higher than the previous month? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So technically, is the stock moving up? Yes, sir. Bullish trend. ठीक है, टेक्निकली द स्टॉक इज स्टिल मूविंग अप। ठीक है, इसको गिरने के लिए 290 के लेवल से नीचे, मतलब 280 पे सपोर्ट फॉर्मेशन करना पड़ेगा, और फिर उस 280 को ब्रेक करके इट विल हैव टू फॉल डाउन, एंड इफ इट फॉल्स द फॉल कैन बी बिलो 260 and it could go to 250 levels. ठीक है, इज दिस क्लियर? अब वापस चलते हैं स्टेट बैंक में। पोजीशन बिल्डिंग अपने को यहां पे समझ में आ रहा है, राइट? Yes, sir. ओके, सो इट सीम्स दैट दिस इज द इंपॉर्टेंट लेवल, और इस दिन पे 370.65 पे ओपनिंग हुआ है, और जो लास्ट प्राइस गया है वो 302 लेवल्स पे गया है, करेक्ट? Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब इसने इस बीच में 310 लेवल को तोड़ दिया है, जो कि हमने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। ये वाला कैंडल है, 310 लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है, करेक्ट? Break. अब डेटा इज ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट स्मार्ट मनी माइट हैव मूव्ड आउट, राइट? क्योंकि इसमें ऐसे लग रहा है कि डीप पॉकेट इन्वेस्टर ने बेचा है। दैट इज व्हाट द डेटा इज इंडिकेटिंग। यहाँ पे देखिए, ये नीचे आ गया है ना विद कूलिंग ऑफ, यहाँ कूल ऑफ हुआ है, और ये जो क्लोजिंग हुआ है आज का वो इस लेवल के नीचे हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कहां पे हुआ है? $300. ठीक है, 300 पे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ है। जो कंफर्म रेजिस्टेंस फॉर्मेशन है वो 300 पे हुआ है, इस वाले जगह पे। सॉरी, 317 से आया ना, तो 310 पे हुआ है ये वाली जगह पे। ये तो लास्ट मंथ का है, दिस इज लास्ट मंथ। आई एम रिमूविंग दिस फॉर द टाइम बिंग। तो this is the place where the resistance formation has happened, right? So now it might go like this, go to 310, form a resistance and then fall. Yes, no, maybe? Yes. ये पढ़ा है मैंने, करेक्ट? Yeah. कि अगर इसको अब गिरना भी होगा तो ये 310 लेवल्स के आसपास में जाएगा, इस वाली जगह पे रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी तो ये रेजिस्टेंस बना है ना, यहां पे अब ये कॉन्फर्मेशन देगा, इस वाली जगह पे एक इंट्राडे रेजिस्टेंस लेवल बना करके ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा, और शायद उस दिन पे 290 लेवल पे आ जाए जिस दिन ये ट्रेड हो। ठीक है, पर अभी ये देख के क्या लग रहा है, क्या ये फल पक चुका है? इज इट रेडी फॉर ट्रेडिंग राइट नाउ? No. When it will reach 310, then only Yeah, so it will have to above fall. 310.
It will have to form, and in fact, the weak resistance level on this chart is at 320. Do you see this? But this is a weak resistance. It is not a confirmed resistance. The confirmed resistance is somewhat like this, where the price has gone up and the price has returned back. Correct? This line is the resistance. This is a weak resistance. So is it easier to break a weak resistance? क्या एक वीक रेजिस्टेंस को ब्रेक करना ज्यादा आसान होता है? हाँ सर। ठीक है, तो बी कॉशियस, क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में है। सर हाँ जी, अगर सर मान लीजिए एसबीआई ने आज 290 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, आने वाले 2-3 दिनों में कभी भी किसी दिन ये 290 के नीचे जाकर के उसी दिन अगर वापस 290 के ऊपर आके क्लोज हो जाए तो हम इसे क्या समझें? फिर तो साइडवेज हो गया है, वो सपोर्ट ले रहा है। हाँ, फिर वो सपोर्ट ले रहा है, 290 के 320 को ब्रेक कर सकता है। आसपास। ओके। क्योंकि आप जो पैटर्न बता रहे हो उसका मतलब ये होता है, ये वाली जगह देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। हाँ सर। इस पे ध्यान रखना है आपको। आप जो पैटर्न बता रहे हैं वो पैटर्न ये वाला है, ये ऐसे गया है, ठीक है। ये जो लो है ना, ये 1 तारीख का लो है, राइट। दिस लो इज 288.35। यहां पे एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। You never know, tomorrow it tries to come here, reverses back, so people will start building position and they will exit out at 310. ठीक है? Yes, sir. That means if tomorrow, if trading SBAN at 288 level, we can build a position, correct? Huh. Actually, what should happen is that on intraday chart, this is what 1st of August. So this is 1st of August, right? Where is the low? The low is here, at this place. Okay. Now, ideally what should happen is, if it has to form support, because this level is below 290, it should come here, it should break this level, revert back strongly and keep going up. That is what should happen if it has to build support at 288 level, which means 290 level. और उस केस में होगा क्या कि ये 288 जो भी है 88.5, ये है ना 88.5 से नीचे गिरेगा. It will have to break this level first. It will break, it will go up. इंट्राडे चार्ट में जैसे मैंने इस पे समझाया ना आपको, इसको ऊपर जाना पड़ता है फिर नीचे आना पड़ता है, तभी रेजिस्टेंस कंफर्म होता है. यस नो मे बी. यस सर. ठीक है, तो वही चीज एप्लीकेबल है इंट्राडे में भी. इट हैज टू फॉल, इसके नीचे गिरेगा, फिर रिवर्ट करेगा, वापस जाएगा, फिर लोग देखेंगे यहां पे पोजीशन बनाएंगे. अगर ये 290 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो यू विल सी दैट देयर वुड बी अ स्लाइट अप मूव व्हिच विल हैपन ऑन द स्टॉक. ठीक है. और दूसरी चीज प्लीज ना भूलें, ये जो भी हुआ है ये रिजल्ट्स की वजह से हुआ है. ठीक है. नाउ रिजल्ट्स आर आउट ऑफ द विंडो. ठीक है.
अब अगर प्रोजेक्शंस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर इज गुड, मार्केट हमेशा फॉरवर्ड कैलकुलेशन पे काम करती है। अगर प्रोजेक्शंस जो है वो आगे के लिए ठीक है, तो यहां से स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब एक काम करते हैं, लेट्स टेक चेंज द स्टॉक एंड विच वन वाज द अदर स्टॉक जो आप लोग बोल रहे थे? Bank. विच वन, सॉरी? Yes, bank. हाँ, यस मैम। पहले इसको डेली में ओपन कर लेते हैं। ओके, अब पहले मैं जून देखूंगा, ठीक है? उसका एक रीजन है, आपको कुछ मेरे को बताना है उसके लिए। तो लेट्स हैव अ लुक हियर। ये देखिए, ये यहां से जून शुरू हुआ है, इस वाले कैंडल से, ठीक है? इस वाले कैंडल से जून शुरू हुआ है और इस कैंडल पे खत्म हो गया है। ओके, दिस इज जून। नाउ आई एम ड्रॉइंग द हाई। Sir, voice is breaking, sir. इज इट बेटर नाउ? अब ठीक है? इज इट बेटर दानू? कैन यू हियर मी? Now it's better, sir. तो ये जून का Yes, sir. मैंने हाई और लो मार्क कर दिया, ठीक है? तो जुलाई में ट्रेडिंग शुरू हुआ, जो भी है, आप देख रहे हैं कि ये इस लेवल को ब्रेक करके आगे कंटिन्यू किया। ठीक है, इस लेवल को इसने ब्रेक किया और ब्रेक करके ये आगे कंटिन्यू करने लगा। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हुआ, आप अगर देखें तो ये जो लेवल था, दिस हाई वाज रफली 351, राइट? सो दिस हाई वाज 351। यस बैंक में कितने के लेवल्स हैं? 10 रुपीज के। तो 351 का मतलब सपोर्ट एट, सॉरी, रेजिस्टेंस एट 350, करेक्ट? ओके, अब 300 के 50 के ऊपर वाला लेवल कौन सा है? 360. 360, 360। ओके, अब देखते हैं। स्टॉक ने 360 लेवल को ब्रेक कर दिया। थ्री 370 लेवल को भी ब्रेक कर दिया। थ्री 380 लेवल को भी ब्रेक कर दिया। थ्री 390 पे रेजिस्टेंस आया। यस, नो, मे बी। ठीक है, अब यहां से यहां तक एक शार्प मूवमेंट था, राइट? बीच वाले लेवल्स को मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है? ये जो 360 का लेवल था, दिस वाज अ लेवल अबव
द रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, जो अगला लेवल था, क्योंकि यहीं से हमें समझ में आया था कि ये बुलिश है, करेक्ट। अब देखिए यहां पे रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ इस वाले जगह पे 390 पे, Yes. ये देख रहे हो। Yes, sir. 26 को ये वापस 360 के लेवल पे आ गया। थ्री सिक्सटी को ब्रेक कर पाया अभी तक? Hey. उल्टा मूव कर रहा है, राइट। जबकि आज तो गिर जाना चाहिए था, राइट। आज तो इसे सॉरी 360 को ब्रेक करके नीचे गिर जाना चाहिए था, करेक्ट। इतना नेगेटिव था मार्केट, तो भी नहीं कर पाया। इस दिन कितना नेगेटिव था रिजल्ट डे, फिर भी 360 को नहीं तोड़ पा रहा है, देख रहे हो। 390 पे रेजिस्टेंस था, फ्राइडे को हमने इसे ट्रेड किया था, 390 पे एग्जिट ले लिया था, याद है, बोला था मैंने। मतलब आप सबने ट्रेड नहीं किया होगा, पर 390 पे हमने एग्जिट ले लिया था, करेक्ट। Impulse move. अब देखो 380 पे लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये इस टाइम पे जब ऊपर गया, यहां पे रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ ऑन 28th ऑफ जुलाई, करेक्ट। फिर ये वापस इसी वाले जगह पे जा रहा है, ये देखिए, राइट। यहां से जब ये मूवमेंट आया तो ये 380 को ब्रेक किया। अब जाकर के यहाँ पे एक अगर आप कोरिलेशन करें तो ये एक रेजिस्टेंस 380 पे फॉर्मेशन हुआ, ये देखिए, ये ऊपर ये नीचे, यस नो में भी, Yes, sir. ठीक है। अब 370 भी ड्रॉ कर देता हूं। अब देखो जब ये यहां से नीचे यहां पे क्लोज हो गया इस वाले जगह पे, तो इसको और इसको कोरिलेट करोगे तो 370 पे रेजिस्टेंस एस्टैब्लिश्ड, Sir. राइट, एस्टैब्लिश्ड। अब देखिए Yes, sir. 360 वाज आवर बेसलाइन, दिस वाज द बेसलाइन सपोर्ट, ठीक है। क्योंकि यहां से तो मूवमेंट शुरू हुआ है, उसके बाद तो बिना सांस लिए ये धर 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 चढ़ता रहा, ठीक है। अब देखिए इसने यहां पे कंफर्मेशन दिया कि हाँ यहां पे रेजिस्टेंस आ गया है, यहां पे देखिए ट्रेडिंग होने लगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रेडिंग होने लगा। ट्रेडिंग जब होने लगा तो यहां से ये गिरा था, Yes, sir. इसके नीचे गया, Reverse. Reverse. एक रिवर्सल आया, Support. Support. इस रेंज को अपसाइड ब्रेक कर गया, इस Yes. वाले जगह को अपसाइड में ब्रेक कर गया।
जब ये अपसाइड में इसको ब्रेक कर गया तो 390 लेवल्स तक वापस चला गया अपने रेजिस्टेंस जोन तक। yes, जो कि अभी तक का इसका टॉप मोस्ट रेजिस्टेंस जोन है, राइट। तो आइडियली ये जो 30 पॉइंट्स का जो जोन था, क्योंकि ये मूवमेंट इतना फास्ट था, इतना ज्यादा फास्ट था कि इसको वापस आना पड़ा यहां पे। सो इट हैड टू रिटर्न टू टेक द रिमेनिंग इन्वेस्टर्स अलोंग for making this, again making this 30 rupees kind of a movement. ठीक है, अब हम इस तरह की मूवमेंट्स को किस तरह से कैच करेंगे। ठीक है, कि हमको पता कैसे चलेगा कि येस बैंक में एक ऐसा मूवमेंट आ चुका है, ठीक है, एंड वी हैव टू ट्रेड इट लॉन्ग in order to get our 100% 200% return on capital during the month। क्योंकि अगर आप देखें तो this was 2nd of August and this was 10th of August। Sir, it's 9th of August. It's not a resistance candle. This one? Yeah. No, because it has to close here. For 380 resistance, it will have to come and close below 380 level. Okay, okay. It's close to above 380, so it's not. Correct. So, Okay. if say something has to form a resistance here, okay, let's take this as an example. Say if this line has to be formed as a resistance, what will happen is first the price will move from below to above. It will happen like this, okay? After that, this is what will happen. This will confirm that there is a resistance here. So the first Okay. thing will happen green, from below to above, it will close here, and the next thing will happen red. It will come back. This means that And this line is a resistance line. okay, okay. Clear. ठीक है, अब होगा क्या कि okay, let's take a 5 minutes break and then resume। ठीक है, we'll start at around say 9:34 or so। Okay, I will start from here only। So 9:34 we will start back। okay, sir.
All right, friends, I'm back. ओके, आप लोग लिख दीजिएगा यस, अगर आप लोग आ गए हैं तो वाई लिख दीजिएगा. ओके. ऑलराइट, तो फॉर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन के लिए प्राइस का ऊपर जाके नीचे गिरना एक स्पेसिफिक लेवल से जरूरी होता है. ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक लेवल से पहले प्राइस ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, और इसका वाइसा वर्सा होगा. अब मान लीजिए अगर प्राइस जो है वो पहला रेड कैंडल था, मतलब ये ऐसे नीचे गिरा था, और अगले दिन ये प्राइस जो है ग्रीन फॉर्मेशन बना गया, तो ये जगह जो है वो क्या बन गई? सपोर्ट हो गया. ठीक है, नाउ अब हम ये देखेंगे कि किसी भी स्टॉक पे आप इस मूवमेंट को किस तरीके से कैच कर सकते हो. ओके, अब देखिए, let me ask this question. Whom shall I ask? Ramu. Ramu? Consider कि ये प्राइस जो है on some day has opened here and it sold off. Sir. It formed a red candle. Okay? And after it formed a red candle, it was a very heavy delivery volume. Okay, now let's consider that on this day the delivery volume was say 35 lakhs. Okay. Okay, now on the next day the price movement was like this, and Sir. on this day the delivery volume was say 15 lakhs, sorry, 25 lakhs. Okay. Okay, now can you tell me, on this day was the selling more? Yes, sir. Okay, so if selling has happened simultaneously, what would have happened? Buying. Buying also would have happened. Okay, now on the next day when the selling reduced, Yes, sir. Cool down. cool down, Yes. what is the price direction? Upward. Yes, sir. Okay, so what is Still this not line confirmed, formation? because it has not Broken the high. broken the yesterday's high. Yes, sir. Yes. Right. Okay, now let's forget this for the moment because that is what I'm going to explain now. But Okay. looking at the candle now, Yes, sir. is it a support formation? Yes, sir. What is this indicating? On this day when the selling happened, are the Yes. buyers going to be correct or the sellers going to be correct? Buy X, sir. Buyers, right? Yes. Okay. Yes, sir. So it means that when this selling happened, this selling was so ferocious that people were sitting below this 260 level. Okay. Yes, sir. And they bought it. And next day they didn't sell it. Yes, sir. Okay. Now since they did Yes, not yes, sell yes. it, the price went up. When the price went up, it means the support at 260 level actually got Hold. confirmed. Yes, sir. Now, if the price starts moving like this, will you be a buyer or a seller? Buy X, sir. Very good. So you will be a buyer. Okay. Yes.
So I always say when the price fall or the price rises, okay, एक बहुत मैसिव डिलीवरी वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है, बहुत मैसिव डिलीवरी वॉल्यूम हो जाता है और प्राइस जो है वो या तो नीचे गिरता है किसी सिग्निफिकेंट लेवल से या फिर ऊपर चला जाता है किसी सिग्निफिकेंट लेवल से। तो जरूरी नहीं है कि जिस कलर का कैंडल बनता है, मान लीजिए ये रेड बना था ना, तो जरूरी नहीं है कि ये सेलिंग था। It may be buying. It might be a delivery based buying which has happened. Okay, you will get to know whether it was a buying or a selling by the behavior of the stock in the coming days. ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। Let's take any example. Let's say Yes Bank only. So I'll take July. We'll okay. Tata Motors. टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स को हम जुलाई में स्टडी करेंगे। ओहो, टाटा मोटर्स को हम जुलाई डेटा में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जुलाई मंथ का डेटा है। ओके, अब फिलहाल हम भूल जाते हैं कि जून में क्या हुआ है, ठीक है, सिर्फ जुलाई पे फोकस करेंगे हम। और इसमें देखते हैं कि डिलीवरेबल क्वांटिटी इन जुलाई फर्स्ट टाइम यहां पे बढ़ा था, सर। यस सर। 5 जुलाई, ठीक है। तो यहां पे बढ़ने के बाद ये कूल ऑफ हुआ, राइट। तो इन 2 दिन का बिहेवियर देखते हैं। अभी ये नहीं देखेंगे कि हाई के ऊपर क्लोज हुआ, लो के ऊपर क्लोज हुआ, क्या हुआ, ठीक है। अभी ये देखते हैं बिहेवियर क्या है। अब ये ऑन दिस डे व्हेन ये डिलीवरी क्वांटिटी इंक्रीज हुआ था, एट ऑन दैट डे द ओपन प्राइस वाज 263.5 and the last price was 263.4. यस सर। टाटा मोटर्स में जो लेवल्स हैं वो 10 रुपीज के हैं या 5 रुपीज के हैं? 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज के हैं टाटा मोटर्स, ठीक है। एवरी 10 रुपीज सिग्निफिकेंट लेवल है, ठीक है। अब यहां पे इंक्रीज हुआ, ओपन हुआ 263.50 और लास्ट प्राइस भी 263.40। अब मुझे ये बताइए कोई भी लेवल टूटा यहां? नो सर। कोई लेवल नहीं टूटा, ठीक है, कोई लेवल इस जगह पे नहीं टूटा है। हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ डोजी, ठीक है। तो none of the levels got broken here. Okay, now we will read one data, और वो रीडिंग ऑफ डेटा है वो ये है कि जब ये डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा था तो प्राइस 263.5 पे ओपन होके 252.55 तक गया था, मानते हो? और फिर 263.40 पे क्लोज हो गया था। यस सर। ओके, तो आप क्या करते हैं, 260 के नीचे गया था, ये ब्रेक नहीं किया, पर 260 के नीचे गया था। वॉल्यूम सेलिंग ज्यादा हुआ था इस दिन। चलिए, कोइंसिडेंटली 260 लिखा हुआ है यहाँ।
Okay, now 260 को ब्रेक नहीं किया इसने, सॉरी इस पे करते हैं। This is the day 5th of July, मानते हो? Yes, sir. ओके अगले दिन वॉल्यूम कूल ऑफ हुआ, लेस सेलिंग हुआ, किस तरफ चला गया ये? ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि इस वाली जगह पे ये वाला जो पॉइंट था 260 लेवल का, ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया और यहां पे सपोर्ट ले गया, तो नेक्स्ट डे जो है शायद शॉर्ट कवरिंग हो गया एंड द प्राइस स्टार्टेड मूविंग अप। करेक्ट। नाउ this was the first time the volume increased. This is the second time the delivery has increased. Yes, sir. Let's see. 274.90 पे ओपनिंग कर रहा है और 275.25 पे ही क्लोजिंग कर दे रहा है। एनी लेवल ब्रोकन? No, sir. नथिंग। करेक्ट। इस दिन पे वॉल्यूम फिर इंक्रीज हो रहा है। ओपनिंग कर रहा है 276.40 पे और क्लोजिंग कर दे रहा है 267.80 पे, राइट? एनी लेवल Yes, sir. ब्रोकन? 270. 270. What is the date? 11th of July. This is the day. Yes, sir. ठीक है, दिस इज द डे। नाउ अब ये देखते हैं हम लोग, ये एक रेंज एस्टैब्लिश हो गया इसके लिए। ये 2 दिन पे वॉल्यूम बढ़ा है, राइट? पहला वॉल्यूम बढ़ा था यहां पे इस वाले दिन पे, पहली बार 5th को, और फिर दूसरी बार जो वॉल्यूम बढ़ा था वो 7th ऑफ सॉरी 11th ऑफ जुलाई को बढ़ा था। करेक्ट। Yes, sir. यहां पे कोई लेवल फॉर्मेशन नहीं हुआ था, पर यहां पे एक क्लियर लेवल फॉर्मेशन हुआ था। करेक्ट। Yes, sir. ठीक है, अब इस Level रेंज formation means. level formation means that it breaks a level and does something. Okay. Okay, this is the first time a level formation has happened. ठीक है, Okay. Opens above some level and closes below that level. correct. So there is a change in the range of the price. ठीक है, and this was 11th, यहाँ पे हुआ था। अब देखते हैं यहाँ पे भी कुछ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है लग रहा है। Yes, sir. 24 Marginally. lakhs. ओपन 67 पे हुआ है और 63 पे क्लोजिंग कर गया है। एनी लेवल्स ब्रोकन? No. नथिंग। No इस level. दिन बड़ा है, 60.50 पे ओपनिंग किया है और लास्ट प्राइस जो 253 पे हो गया है। करेक्ट। Yes. 260 level broken. So 260 level is broken. Now I am modifying this line to 260. Okay. Now this date was 16th of July. Yes. This day. Correct. Yes. Okay. Now
The next day there was an inside candle. Again, the next day there is an inside candle. Nothing much is happening. Okay, nothing much is happening here. All right. Now, do you see it tried pushing back? ये जब ये लेवल टूटा है ये वाली जगह पे, ठीक है, ये इस जोन से इस जोन पे आया है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट लेवल, करेक्ट? नाउ इफ दिस इज द इंपॉर्टेंट लेवल, this day it broke, it didn't go back. This broke, okay. The very next day there was short covering. Yes, sir. Okay. The very next day there is short covering. What is the level below this? 250. Yes. So 250 it touched. It tried breaking this level. Couldn't do anything. Did the price go back to 270 before coming back to this level? Yes. Okay. Now, so the first time the level was broken here, the second time the level was broken here, Retest. this is exactly what happened with this stock. See. Okay. Now, if I have to ask you, within this zone, can we consider this to be a resistance formation? Yes, sir. Right? And can I consider after this day there is a support formation? Yes, no, maybe. This 260 level, this broke down and this went up, right? So on this day, is there a confirmation that this is a support? Yes, sir. Right? Okay. Now in the month of August, did it break this support? Sir, It broke the support and Yes, sir. started pushing down. ठीक है, अब देखिएगा, this month the range was very small. Tata Motors range was extremely small. ठीक है, because the entire month till 31st of July was spent in formation of these zones. This month on 1st of August it opened here, it went inside, broke the support line, kept falling from 260 levels all the way to 245 something levels. ठीक है, and is this stock in a downtrend? Yes, sir. What will you trust more? Okay, resistance formations. ठीक है, now ideally what should happen in a, जो मैं कह रहा था आप लोगों से कि जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहेगा वो सपोर्ट्स को नीचे पुश करेगा और जो स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा वो रेजिस्टेंसेस को
ऊपर मूव करेगा, राइट। और सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस कुछ नहीं होते पर सिग्निफिकेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो कुछ भी नहीं होता पर वो एक सिग्निफिकेंट लेवल होता है, ठीक है। अब इस महीने का, इस वाले मंथ का, जुलाई के मंथ का जो पहला सिग्निफिकेंट लेवल टाटा मोटर्स ने बनाया था वो कहां पे बनाया था? 270 पे। बाकी सब कुछ हटा देता हूं, क्या ये क्लियरली दिख रहा है आपको? ठीक है कि इसने एक सिग्निफिकेंट लेवल को इस्टेब्लिश किया, उसको इस्टेब्लिश करने के बाद वो फिर दोबारा से डाउन ट्रेंड में चला गया, उसी जगह से वो डाउन ट्रेंड में चला गया, फिर यहां पे कुछ करेगा शायद, ठीक है, उसके बाद फिर चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये 260 पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इस दिन पे क्या ये 260 के नीचे खुल के या फिर 250 पे भी कर लीजिए लाइन को ड्रॉ। ठीक है, ये क्लियरली 260 के नीचे खुल के ऊपर जाके क्लोज हो गया था। यस सर। यहां पे क्या वो नीचे आके क्लोज हुआ? यस सर। रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कंफर्म हुआ? वही रेजिस्टेंस बना, स्टॉक शार्पली सेल ऑफ हुआ, करेक्ट? यस सर। ओके, स्टॉक जो है वो शार्पली सेल ऑफ हो गया इसी वाले लेवल से। और अगर आप देखें तो ये जो भी सिग्निफिकेंट लेवल था ये 270 पे बना था, ये वाला जो सिग्निफिकेंट लेवल है वो नीचे बना है, मतलब 260 पे बना है। नीचे है ना? ओके, और अगर ये नीचे है, स्टॉक डाउन ट्रेंड पे है, तो वो लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, यस नो में भी। यस सर। तो स्टॉक्स का जो मूवमेंट होगा वो हमेशा इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ देवेंद्र। कल आपने बताया था कि सेम डे पे नीचे से ऊपर जाके नीचे आएगा तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। करेक्ट। आज वो कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है। आज बोल रहे हैं आप ये पहले ब्रेक करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, तो वहां पर जरा थोड़ा बता देंगे सर। ओके, अब देखो कल जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज मोर फ्रॉम अ इंट्राडे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि अगर आपको लो से उठाना है तो आप उसको किस तरीके से उठाओगे, या हाई से अगर आपको बेचना है, से फॉर एग्जांपल यस बैंक पे मैं बता रहा हूं, अगर आपको हाई से बेचना है तो आपको किस तरीके से बेचना है उसे। ठीक है, ये जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है ये बेसिकली जो स्टॉक का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो मूवमेंट किस तरीके से होता है स्टॉक के अंदर वो मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपको स्टॉक बियरिश दिखता है, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंट लेवल नीचे की तरफ बन रहा है, ओके,
और वहां पे वो रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है, तो विल यू बी कंफर्टेबल सेलिंग दैट स्टॉक? हाँ, नीचे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। हाँ, मतलब सिग्निफिकेंट लेवल को नीचे पुश कर रहा है, मतलब यह है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म बेयरिश ट्रेंड में है, ठीक है। सिग्निफिकेंट लेवल को नीचे फॉर्म कर रहा है, ओके, और उस जगह पे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो रहा है, तो विल यू बी कंफर्टेबल सेलिंग इट? यस, ओके, तो इस तरह से आपको डिसीजन मेकिंग करना है, ठीक है। ये आपको फ्लो बता रहा है स्टॉक का। दिस इज कंफर्मिंग ट्रेंड्स टू यू कि यस द स्टॉक इज स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड। ओके, अब देखिए, जरूरी नहीं है कि आप स्टॉक को यहां पे सेल करेंगे, इस वाली जगह पे सेल करेंगे, जरूरी नहीं है। आपने देखा कि हाँ इसने सिग्निफिकेंट लेवल को यहां फॉर्म कर दिया है, मोस्ट लाइकली यहां पे रेजिस्टेंस बनना चाहिए, राइट। अब यहां पे इस दिन पे इसने हिट किया इस रेजिस्टेंस को, करेक्ट, 260 लेवल्स पे इसने हिट किया। तारीख क्या है? 9 तारीख। अब टाटा मोटर को 9 तारीख पे ओपन कर देता हूं। अब देखिए, टाटा मोटर्स यहां पे 9 तारीख था, एग्रीड। यस सर। 260 पे इसने टच किया था, 260 पे टच किया था, तो हमें ये लगा था कि अब इसमें रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो गया है, यस सर। ठीक है। इस दिन का अगर हम देखें, 9th का जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। अब इस दिन जो मोस्ट सिग्निफिकेंट कैंडल बना इस वाले दिन पे, जो हाईएस्ट वॉल्यूम का कैंडल बना, वो ये वाला बना 12 बजे, यस सर। ये वाला। ठीक है, 12 बजे पे बना। और अगर हम देखें तो ये वाला जो एक एरिया है, यहां पे आपको दिख रहा है कि 9 तारीख को आखिरी बार 1 2 3 बना था, मतलब वॉल्यूम्स ब्रेकआउट हो रहे थे और प्राइस फॉल कर रहा था, करेक्ट। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, ऑन दिस पर्टिकुलर डे जब ट्रेडिंग चालू हुआ, यहां पे एक कॉन्फर्मेशन हुआ है, देखिए ग्रीन 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 बना है, एक के बाद एक राइजिंग वॉल्यूम बना है। इसका जो हाईएस्ट वॉल्यूम था वो यहां पे था। इस रेड कैंडल ने इस ट्रेंड के हाईएस्ट वॉल्यूम को ब्रेकआउट किया है, यस सर। वो कैंडल यहां पे है। आर यू बेयरिश इन द स्टॉक और आर यू बुलिश इन द स्टॉक? ये जो कल का डब्बा है और ये जो आज का डब्बा है, ये नीचे बना है या ऊपर बना है? कल का जो इंपॉर्टेंट कैंडल है, ये प्राइस लेवल के ऊपर है या नीचे है? सो इज इट कंफर्मिंग ट्रेंड्स टू यू?
अब अगर मुझे इसको इंट्राडे ट्रेड करना है आज इस दिन पे 10 तारीख को, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ब्रेकआउट हो गया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट वॉल्यूम का कर दिया है, राइट। अब या तो मैं इस वाले लेवल को सेल कर दूंगा, इस ऊपर वाले लाइन को मैं सेल कर दूंगा, मतलब ये वाला जो जगह है 257.85, ठीक है, 257.85 को मैं सेल कर दूंगा, ओके, और रफली 5 रुपए का टारगेट लगा दूंगा इस पे। तो ये कितना हो गया, 58 मान लीजिए, 5 मतलब 53, 52.85 के आसपास टारगेट मेट। Yes, sir. 40% रिटर्न ऑन कैपिटल। Yes, sir. ठीक है, तो स्टॉक मूवमेंट, यू हैव टू फॉलो अ स्टॉक मूवमेंट। कभी ऐसे परेशान नहीं हुई है कि अरे ये तो ऊपर चला जा रहा है, ये तो नीचे, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। सिग्निफिकेंट लेवल से आपको ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। यहां पे आपको जब समझ में आ गया था कि ऊपर गया है नीचे गया है, रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है इस वाली जगह पे, अपने को समझ में आ गया था कि ये देखो यहां पे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है मोस्ट लाइकली यही वाला लेवल जो होगा, यही लेवल इसका सेलिंग लेवल होने वाला है, ठीक है। अब मुझे तो इंट्राडे ट्रेड करना है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो या तो इसको 6 तारीख को ट्रेड करेंगे, या फिर इस दिन पे हिट कर गया है, यहां पे चला गया है, इस दिन पे ट्रेड करेंगे। यस बैंक को देखो, 290 का लेवल था यहां पे, ठीक है। 290 लेवल को हिट किया यहां, मान लो, उसके अगले दिन अपने को देखना है कि किस तरफ जा रहा है। ये कौन सा तारीख आज का है ना, ये तो ठीक है। इतना बहुत ज्यादा कुछ बनाने का भी जरूरत नहीं है इसमें तो, खैर। इसको आप कैच नहीं कर पाते क्योंकि इसमें कोई ट्रेंडिंग जोन नहीं था। इसको आप कैच नहीं कर पाते इंट्राडे में क्योंकि इसमें कोई ट्रेंडिंग जोन नहीं था, ठीक है। पर अगर वैसे देखेंगे तो 380 लेवल वाज द सपोर्ट। ये वाला रीजन देख रहे हैं आप, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस दिन पे अगर आप देखें तो प्राइस जो है
ऊपर खुला है और इसने सपोर्ट फॉर्मेशन किया है, करेक्ट? यस नो में भी प्राइस ने 380 लेवल्स पे सपोर्ट था ना, उसके ऊपर खुल के नीचे आके ऊपर चला गया है और ऊपर क्लोजिंग कर गया है। तो इस दिन पे सपोर्ट था, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सपोर्ट यहां पे है, ये जो लोएस्ट लेवल है, ठीक है। इस वाले जोन से सेल ऑफ होना चाहिए, इस वाले और इस दिन पे भी हुआ था, इस वाले के बीच से सेल ऑफ हो जाएगा। ये देखिए, इसके और इसके बीच में, इस रेंज के बीच में से, ये जो भी ₹1 का रेंज है, इसके बीच में से सेल होना चाहिए, वही हुआ है, ठीक है। बट मोस्ट लाइकली आप येस बैंक को शायद कैच नहीं कर पाते आज सेल साइड पे, ठीक है। पर टाटा मोटर्स जैसे है, इट वाज इजी ट्रेड, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे पर डे जो आप कर पाओगे, आपको इतना कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? ओके, तो एक बात बताइए मेरे को, मोटा मोटा, अगर आपको बाई करना है तो व्हाट विल यू लुक फॉर, रेजिस्टेंस फॉर्मेशन और अ सपोर्ट फॉर्मेशन? Resistance part. If you have to do what? If you have to buy something, you will look for something like this. Support. Yes or no? What is this called? Support broken. This is called a resistance formation or a support formation. This is also a resistance formation. So what you have to keep in mind is whichever level you are talking about, okay, it has to be a significant level, point number 1. दूसरा है कि आपका वहां पे सिग्निफिकेंट लेवल का फॉर्मेशन होना जरूरी है, ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर, करेक्ट। तो नीचे से ऊपर जाके फिर ऊपर से नीचे आएगा, या फिर ऊपर से नीचे गिर के नीचे से ऊपर जाएगा। दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब आज आई एम सॉरी, थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है ये क्लास आज का, किसी को जल्दी तो नहीं है? देन आई कैन क्लोज डाउन, वी कैन कंटिन्यू टुमारो, नो प्रॉब्लम ना? अच्छा, अब ये टाटा मोटर्स है, राइट? अब मुझे ये बताओ गाइस, जस्ट लुकिंग एट द क्वांटिटी एंड डिलीवरेबल क्वांटिटी, कि इस पूरी जुलाई में which was the most important day from the volume and deliverable volume perspective? July 5th. Okay, July 5th is the heaviest volume. Right? And maybe coincidentally, no, this day is the heaviest deliverable. July 27. 27. So
from the delivery, from the traded quantity perspective is this one, 5th of July, and from deliverable quantity perspective, it is 27th of July, correct? Sir. Okay. Now, on this particular day, when the heaviest of the volumes came from investors, let's look at what happened. 259.10 and it closed at 268.30, right? This and Yes. this. So it broke a level which is 260. 60. So on 27th, the most important delivery day that we see, it broke something which is this line. And वो दिन कौन सा था? 27th of this Right. month. So this day, correct? This was the day. Yes, sir. Okay. Now after this day, so this seems to be the most important or the most significant level. This month when the opening happened, जब opening हुआ, तो वो इस लेवल के नीचे हुआ. Yes, sir. इसी लेवल को इस महीने में रेजिस्टेंस फॉर्म किया गया. Yes. And it went down. ठीक है. अब मान लो येस बैंक. अब येस बैंक में बताइए मुझे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे दैट यू थिंक? July 26. So this day. So the opening happened at around 385. Opening happened around 385 and the last price is 367. So did it break something? Yes, sir. 370, 380. 370, 380. So let's see. 1st of August. The opening is negative. Yes, sir. It went up. Yes, sir. It again went up. Yes, sir. Is it not choppy completely? See it. On 3rd, it clearly went up, right? So this is one of the Yes, sir. significant levels. It is opening below the significant level. It went up clearly. Now it should also do something, right? It should come down because it's a negative opening. So if it comes down, then it forms a what? A resistance. Significant level. Correct? It will form a resistance over here. Now that didn't happen. It broke outside. Okay, so roughly 380 opening and it closed here. But again, a clear resistance formation we can't see. So is it not choppy currently?
Yes, sir. Okay, so leave this stock unless the trend is clear. Don't try to venture into it. This is State Bank of India. According to you, which is the most significant day? 26th July. 6th July. 26th of July, right? Where is it opening? 275. Where is it closing? 287. So any level that it breaks? 280 level. 280 level. So 280 level is this, right? Now 280 level, stock opening bullish, right? This is where it is opening. Any support resistance formation till now? Nothing, right? So most likely if it comes here, returns back, there might be a long trade from 280 levels to maybe 350 levels. M and M. Okay. Which is the most significant volume? Twenty-sixth July. 6th July. 26th of July again. ठीक है? Okay, sorry. 26th of July opening 914 और closing कर रहा है ये sorry, last prices 912. Any level broken? No, None, right? no level. None. तो ये अपने को नहीं चलेगा. तो let's look for the heaviest volume day. I think it has broken 910 now. No? The 910. low was 906 on that day. 26. हाँ, but it could not clearly break any level. 20 rupees level. That's closed right here. Hmm. 11th of July, 27 lakh 38 or 26th July. 27. 6th of July. 6th of July. 6th July. Okay, 29. So this is the heaviest volume day. What is the level open is 914 and last price is 925. Did it close? Did it break something? 920. 920 levels. So this is the one. So 1st of August it is opening positive, correct? Broke back. Okay. Is there a movement? Higher high. Higher high formations. Okay. So the most important thing is that did it respect? Yes, it opened at 1st of August. It opened positive, came down. So
all anadis must be thinking it will fall, right? ठीक है. So they took short positions here in futures. Next day the price went back. ठीक है. And it's clean. The most important thing is it is clean. So it is coming down, it is going back. So a support formation is confirmed. Yes, no, maybe. Yes, sir. Now if the direction is positive, you can trade it. There's no problem. And don't worry about all this red. It is above this line. It is bullish. We don't care about what is the color of the candle. If we are trading in options, there is a time value and it's decreasing the money value and all. How? See, in options, the time has to be in your favor, right? That is the only negative thing in options. Rest everything is very positive. Okay. Now, how will you fight against time? You can fight against time if the volatility is in your favor. If the volatility is increasing, say you are intending to buy calls, ठीक है, आप कॉल खरीदना चाह रहे हो, then in that case जो volatility है वो पॉजिटिव साइड पे बढ़ना चाहिए. अगर वो बढ़ रहा है तो don't worry about the time decay and all that. It will give you 100% return on capital minimum. ठीक है. और अगर आप पुट साइड पे जाना चाह रहे हो तो द volatility has to increase in the negative side, मतलब नीचे की तरफ. अगर वो हो रहा है तो you don't have to worry, you will get a 100% return on capital. Don't worry. अब say for example, ठीक है, अब मान लीजिए कि ये वाला दिन है, right? It came down and it returned back, correct? 3rd of क्या है, अगस्त है, correct? स्टॉक ऑप्शंस सिंबल कौन सा है, ये M&M है ना? Year 2018, मान लो expiry is this. I'm taking put opposite direction. Okay. कितना लेवल था? 920. एक तारीख से चाहिए ना, ठीक है. अब इस दिन पे गिरा है. What is the date? 2nd of August. 920 is the significant level. We are trying to confirm it opposite. Opposite means put. We know that it should go up, but we are going in the opposite direction to be doubly sure. So 920 is the level. Of put. Open interest not added. ठीक है. No increase in open interest. Yes. On this side. Okay. जबकि मैसिव होना चाहिए ना ये तो, मतलब people should terribly sell call puts.
टेरेबली सेल, है ना, Yes, sir. कि भाई अब तो 920 का लेवल टूट चुका है और महिंद्रा एंड महिंद्रा बर्बाद हो चुका है, अब कोई होप नहीं है. तो देयर शुड बी अ ह्यूज ओपन इंटरेस्ट एडिशन ओवर हियर, है ना, ऐसा होना चाहिए. पर ऐसा लग नहीं रहा है. लोग पुट के साथ ऐसा कुछ बिहेव नहीं कर रहे. It is July now, sir. You are One checking August. sorry. तो वही मैं कहूँ ना, यहाँ पे शिट, सॉरी. हाँ, ओके, ओके, राइट. Good. 920 यहाँ से उठाते हैं. फर्स्ट ऑफ, 1 second, why is it July? It is August, no? We were doing it. Sorry. मैं भी कंफ्यूज हो गया, सॉरी यार. मुझे लगा मैं लास्ट मंथ का कर रहा हूँ. 1 second. ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे. ठीक है, अब इस दिन पे भाव कितना था? हाई 3060 and low is 2465. It broke the low. ठीक है, see, on this day it broke the low and it added some open interest, which means some sort of selling has come. Next day, if you look at it, the low is further broken, Yes, sir. Yes. right? Increased, broken. See, it was at 30 rupees, came to almost 5 rupees. When does it happen? When does the price fall? प्राइस बाइंग से गिरता है या सेलिंग से गिरता है? सेलिंग से गिरता है, राइट? और आप लोगों ने ऐसे ही फ्रॉम जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेरिवेटिव्स में अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है तो इसका मतलब सेलिंग हो रहा है. तो लोग पुट बेच रहे हैं, यस और नो? और अगर लोग पुट बेच रहे हैं तो लोग क्या सोच रहे हैं कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा. 920 से नीचे नहीं गिरेगा. ठीक है, 920 से नीचे नहीं गिर पाएगा. ऑलराइट गाइस, तो हाँ काजिम, नो इश्यूज, वी आर ऑल्सो वाइंडिंग अप नाउ. तो सो वेरी सिंपल थिंग्स. ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टार्टिंग में इसलिए लगा होगा क्योंकि मुझे वो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करना था. अदरवाइज इतना सिंपल है कि एक लाइन से हो जाता है. ठीक है, वो पूरा नाम कहानी मैंने इसलिए सुना है जिससे कि आपको मतलब जो अंडरलाइन लॉजिक है वो समझ में आ जाए. ठीक है, एनी क्वेश्चंस?
हम इस टॉपिक को कल भी रिपीट Sir, in करेंगे. future days, बोल. sir, in next days, we will discuss about the intraday perspective or still the options side. No. We will come to intraday. See, if you have understood the trend, trading it on any day will not be a difficulty. ठीक है? Have you understood that it wants to go up? No. My question is, have you understood that it wants to go up? A doubt also. Still now, it's the trend is up. Tomorrow morning, how it will trade, we don't know. That is the intraday perspective, is it right? No. The intraday perspective Still is, now, the chart is showing uptrend. the intraday perspective is this clear? Is this clear? That it has built support? Yes. Okay. Sure. Maybe tomorrow it will fall down to. Which is okay. Don't worry about all that. through the Did downtrend. did it open gap down? Gap up? Over here, Yes. did it Gap open up. gap Yes. up? Right? Yes. Sure. Yeah. With liquidity gap. It opened gap up. Yes. ठीक है? Sold off, right? Yeah. Could not go up. This Yes. was a trading day. This was a trading day on the long side. ठीक है? But it didn't work out. It didn't work out in the sense that it didn't break the high. Yes. Sure. Yeah. The 7th. Hello. Yeah, 1 second. 7th of August. Okay. This is the day. Seventh of August is here. Okay. This day. Not this day. This day. Can you hear me, guys? M&M. It's breaking. The voice is breaking. Sir. There is some packet loss. It's giving me alerts. 1 second. One second. Is it better now? Yeah, it's better now. Okay. Now, on this particular day, this was a trading day, okay, on M&M. Intraday. See, the price has gapped up, Yes. Sure. Yeah. okay. So, it should move in this direction. Look at Of the course. 5 minutes chart. The high is, the high of the first 5 minutes candle is not compromised. Okay, you will learn this, don't worry. Okay, so it is not compromised. Yes. And let's see. This is a trending zone. This is the volume.
volume is also not compromised. See, it didn't go above this. So no position was made on this day. Okay, so there was no opportunity. The stock is in your radar. You know it should go up. But this day, when it was a trading day, it did not confirm you the trend in order to make a position in it, intraday position in it. Okay, so you left it. It's okay, fine. Next day, it broke the low. See, it went lower than previous day low. Where is the okay, now, so this day got negated, didn't work out. Next day, the low was also compromised. Is this the first day when the high is taken out? Okay, so didn't work out on this day. Okay, 8th, this is 9th. Okay, it is opening from here. Put a separate. Okay, now on this particular day, you see the high is broken. It is taken out. The high has been taken out. Okay, if the high is taken out, 1, 2, 3, 4. This is where it is. The price did not return. So the first position level is here. Okay, even if you build the position and it doesn't go up, don't worry. Just close the position. It's not going to give you a loss. Now on this day, if you make the position here, it went up. Volume is taken out. Built a position, went up. Okay. So more or less, see, but even if it came down, it was here. Okay. So from an intraday perspective, okay, more or less the logic of identifying the stock is going to remain the same. ठीक है, ये सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है. ठीक है, आपको जो आइडेंटिफिकेशन है और ट्रेंड कॉन्फर्मेशन है वो कुछ इसी तरीके से करना है. The only difference would be that maybe you don't want to trade auto stocks, rather you want to trade say metals or FinServ or IT stocks this week. So how to identify that? That will also be taught during this week. Okay. Now, if you sorry, okay.
So anyways, so we'll continue with this tomorrow also. Okay. So all of you guys, irrespective masters class also, should join this class at 8. Okay. So we will talk about a few more concepts on this. Okay. So that you are able to identify your stock, how to shortlist the stock. ठीक है, और फिर उसमें पोजीशन को किस तरीके से बनाना है. सो टुमारो वी विल आल्सो टॉक अबाउट सम इंट्राडे पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टॉक्स. ठीक है. Okay, sir. Good night. Okay. Good night, guys. Bye bye. Bye, sir.